से आप जा सकते हैं, मतलब ना हम लोग जीटीए को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जीटीए की एग्रीमेंट से हम लोग अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को देखना चाहिए, क्योंकि जीटीए का एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा मैंने साइन किया था। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पाठक ने साइन किया था, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम डिपार्टमेंट। और उस टाइम का होम सेक्रेटरी जीडी गौतमा, उन्होंने साइन किया था। एज सिग्नेटरी, वन ऑफ द सिग्नेटरी हम अपना विड्रॉ कर रहा है सिग्नेचर। So what is your thinking? What is your plan in the future? If the signatures is ticketed, then what do you plan to do? No, for further program, Gorkha Janmukti Morcha will sit and decide and discuss what will be the future plan. More specific of what exactly you are very unhappy about. Little more specific. You see, GTA, it has not been able to deliver anything. Tarai and doors has been left aside. Tarai and doors, as per GTA Memorandum of Agreement and Act, Samuel Sen Committee, Justice Samuel Sen Committee, this only included 5 maujas. We were demanding 396 maujas. Only 5 maujas were included, which we denied. And GTA has not been able to deliver to the people of the region. And Tarai and doors has been left aside. So we want some inclusive, including Tarai and doors. And it has not been able to restore the Gorkha identity of the people of the region. तो इसलिए जीटीए के एग्रीमेंट की ओर से हम लोग विड्रॉ कर रहा है सपोर्ट। जब जीटीए एग्रीमेंट हुआ था, यही पिंटेल विलेज में the then Home Minister of India, Sri P. Chidambaram, Chief Minister, Government of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, the then MP of Darjeeling Parliamentary Constituency, Sri Jaswant Singh, और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रेसिडेंट विमल गुरुंग जी के सामने ये हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें मैंने सिग्नेचर किया था। तो आज मैंने ऑन बिहाफ ऑफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख के हम ये सिग्नेचर विड्रॉ कर रहा है। पहले तो ये एक चुक्ति हुआ था, बाद में तो ये एक्ट बन गया, जीटीए एक्ट। अभी कितना पॉसिबल है ये एक्ट? नहीं, देखिए, जीटीए का एग्रीमेंट की तौर से एक वहाँ पर क्लॉज है जहाँ पर पीरियोडिकल रिव्यू होता है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बैठ के, तो ये बहुत साल हुआ है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वहाँ बैठ के रिव्यू भी नहीं हुआ है। हाँ, 2015 29 ऑफ जनवरी 2015 को लास्ट ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुआ था, जिस दिन सुभाष जी सिंह जी का देहांत हो गया था। 2023 को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह
और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मिस ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है जिसमें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने 2011-18 जुलाई को ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया था गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का लिए जो हस्ताक्षर किया था। वहाँ से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट से अब विड्रॉ कर रहा है। हम लोग एज सिग्नेटरी of tripartite agreement between the government of India, government of West Bengal and Gorkha Janmukti Morcha. Gorkha Janmukti Morcha withdraw the support from the tripartite agreement of GTA. No, our next course of action will be, we will sit and discuss and decide. दादा ऐसा कोई क्लॉज है जीटी एक्ट में कि टू सिग्नेटरी अगर विथड्रॉ कर ले अपना सिग्नेचर? नहीं, वो नहीं, तो वो नहीं, वो तो वो नहीं। So what is your take about BJP's? You pointed out what they are promising in their manifesto 2009, 14. BJP now it's a government of NDA, so it is up to the government to decide what permanent solution would be the best for the people of the region. So what is your experience here? Is the BJP sincere or not? No, BJP till now it has not been sincere, but let us see. They have the tenure till 2024. But that day from Kalimpur, Guru said that we should be thankful to Aluwalia, Jaswant Singh and Raju Vishnu, and they are doing their best and we are not able to express our gratitude. What is your take on this? No, you see, Jaswant Singh ji, Aluwalia ji, even the present MP Raju Vishnu, they have been voicing, they were able to voice the demand, but the government, it has given a deaf ear. Now it is up to the government to understand. You want inclusive that also includes Tara and those. What is your specific proposal? No, central government, BJP, they have already said that they will be going for a permanent political solution, and in the Sankalpa Patra of BJP, they have said that Darjeeling district and Doors region. Darjeeling district means Silguri Terai also comes into Darjeeling district, and Doors. So the government of India, now it has to think. Our demand is a separate state of Gorkhaland. But you have been fighting for Gorkhaland since second phase 2017. So today is 2023. What made you so late to withdraw yourself from the private agreement? So you see that we were seeing that Tarai and Doors would be included. We submitted one of our proposal to the Chief Minister. But as one of my colleagues rightly pointed out, it has already become an act, okay? So It has become an act. Will your withdrawing make any difference to the Central? No, that it is up to the government to understand. But as one of the signatory, we are withdrawing our support. Suppose your support towards and their area, and your focus will be in Delhi. So क्या किस तरह का प्रोग्राम आप लोग वहाँ पे करने वाले हैं? प्रोग्राम तो आने वाला दिन में देखिए, अभी हमारा एक नेशनल कमिटी भी बना है जिसमें हाम्रो पार्टी अजय एडवर्ड का, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और विभिन्न स्टेट का प्रतिनिधि है। इसमें विनय तामाङ भी शामिल है, प्रदीप प्रधान ने भी अपना सपोर्ट जताया है। तो आने वाला दिन में नेशनल कमिटी भी बैठ के
काम करेंगे। आज जो लेटर आप लोग भेजे हैं लेटर को, फिर उसका वेट कितना तक करेंगे, उसके बाद में आप लोग अपनी कार्रवाई अपना नेशनल कमेटी का अपना मीटिंग होगा, अपना गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का अपना होगा। जो आज लेटर आप लोग भेजे हैं होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को, तो उसकी रिप्लाई का वेट आप लोग कितना दिन तक करेंगे? हम लोग इंतजार करेंगे, हाँ, क्या होता है क्या नहीं होता है। तपाईले त युनियनलेटर विथड्र गर्नुभयो, तर तपाईहरुको अहिले नेशनल कमिटीमा अझै एडभोकेट्स पनि तपाईसँग मिलेर गोर्खाल्यान्डको लागि तपाईहरु काम गरिरहनु भएको छ। अझै एडभोकेट्सको पार्टी चाहिँ अलरेडी त्यो इलेक्टेड भएर समाजसेवी मात्र छन्। अझै एडभोकेटले के गर्नुपर्छ? व्हाट इज सजेसन फर? नहीं, वो तो आप अजय एडवर्ड जी को पूछिए वो क्या करें। नहीं, हमारा सजेशन कुछ नहीं है। हम लोग जीटीए का एग्रीमेंट से यूनिलैटरली अपना सिग्नेचर विड्रॉ कर रहा है, बस। Prior to 2021 election, he lambasted the BJP and the central government. So what made him No, change BJP, we supported BJP right from 2009 to 2020. In the meantime, They promised. Your leader lambasted. So he They was- promised, but nothing happened. We didn't get anything during the time of NDA rule. But since they have their tenure till 2024 and they have put the word in Sankalpa Patra, we hope that something positive will come out, but that also we can't say. Roshanji, when Bimal Guru came back from after 3 years, he was sounding very soft towards Mamata Banerjee's government, and he was let me reiterate that he was lambasting the BJP government. Now again he is proving himself to be very soft towards BJP. Why this sudden change? So in that his is, style? you see, that you have to ask Mr. Bimal He is Guru. your leader. He is our leader, but you have to ask him. You see, we had also put our faith on Mamata Banerjee's government, and we appealed her to implement the GTA Memorandum of Agreement and act properly, include the Mauzas of Silgudi, Terai and Doors, but nothing happened. So Mamata तपाईको लागि ममता पनि सिन्जेस हैन? हैन, अहिलेको टाइममा अब हामीलाई बङ्गाल गभर्मेन्टले पनि केही दिएन, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि केही दिएन। तपाईँ के गर्छ? हामी एकत्रित भएर अगाडि बढ्ने प्रयासरत छौँ। जिटिए तपाईँ कसरी के गर्नुहुन्छ? जिटिए को फेरि तपाईले विड्रो गर्नुभयो, युनियनको सिग्नेटरी। अब के लाग्छ जिटिए को फेरि के हुन्छ? जीटीए का क्या होगा, कैसा नहीं होगा, क्या होना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल समझे। हम लोग का तो अपना डिमांड तो गोरखालैंड है। तो गोरखालैंड के लिए क्या करने जा रहे हैं लोग? नहीं, आने वाला दिन में हम लोग पहाड़, तराई और डोर्स में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वी विल नॉट डू एजिटेशन इन दार्जिलिंग हिल, सिलगुड़ी, तराई एंड डोर्स। आवर एजिटेशन इट विल बी फोकस्ड इन दिल्ली। तपाईँले यो प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर, चिफ मिनिस्टर लेखेको चिठी पठाइसक्नु भएको छ, पठाउनुहुन्छ? पढ़ाइसक्यो कसरी पठाउनुहुन्छ? बाय हम लोग ने रजिस्टर्ड पोस्ट कहिले पठाएको? आज भेजा है। मैं आप लोग को चिट्ठी भी शेयर कर दूंगा इसमें। सफ्ट कपी दे दीजिए हाँ, आप लोग। हाँ। रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, उसका लिए बिमल जी को आप पूछना पड़ेगा, डॉक्टर लोपसांग लामा को पूछना पड़ेगा, अजय एडवर्ड जी को पूछना पड़ेगा। नहीं, पंचायत इलेक्शन में हम लोग ने बोल दिया है कि हम लोग पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि पंचायत बॉडी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी एउटा क्वेसन हामीलाई थाहा छ, यसको सिनियर एकाडेमिक डेभलपमेन्ट बोर्डले इन्डिया परेसन नि त, यसको कुनै पनि सिग्नेटरी मेम्बरले विथड्र गरेको इतिहास छ कि छैन अहिलेसम्म? त्यो त मलाई याद छैन, तर हामीले चाहिँ युनिल्याटरली विथड्र गर्दैछौँ। वी आर विथड्रइङ आवर सपोर्ट। थ्याङ्क यू।